If you are confused about company law syllabus, important topics and previous year questions, then this video is for you. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, make sure to subscribe because on this channel we talk about BCom studies, exam preparation, PYQs, notes and smart study tips. And today's topic is BCom Semester 2 Company Law. Now let's quickly understand the syllabus unit wise. Unit 1 Introduction, Meaning and Characteristics of a Company. Company क्या होती है? Company is an artificial person. Lifting of corporate wheel. Overview of administration of company law. Types of companies. सबसे important types of companies है private company, public company and one person company. Now coming to the unit 2 Formation and Incorporation Documents. Formation of company, promoters and their legal positions. Process of online registration of a company, MOA, AOA and its alteration, doctrine of constructive notice, doctrine of ultra-vires and indoor management. अब है हमारे पास यूनिट 3 शेयर कैपिटल. इन दिस यूनिट यू विल स्टडी प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, बुक बिल्डिंग, अलॉटमेंट एंड फोरफीचर ऑफ शेयर, sweat equity, ESOPs, bonus share, further issue of shares, buyback, provisions regarding buyback, transfer of shares, DMAT system. नाउ कमिंग टू द यूनिट 4 मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स. इसमें आपको बोर्ड मीटिंग्स के बारे में पढ़ना है, डायरेक्टर्स, उनके लीगल पोजीशंस, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सन, AGM, EGM. नाउ लास्ट यूनिट 5 डिविडेंड्स, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. इसमें आपको प्रोविजंस रिगार्डिंग टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल, रोटेशन एट्सेट्रा, वाइंडिंग अप प्रोसेस, provisions of winding up under insolvency and bankruptcy. Now let's move to the most important part, previous year question. ये आपका एक previous year question paper लगाया हुआ है जिसमें आपको सारे questions करने हैं and all questions carry equal marks. First question is explain the role of registrar of companies, central government and national company law tribunal in the administration of the Companies Act 2013. B part is write a short note on one person company, small company, associate company. और पार्ट में आपसे पूछा है कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, कमेंट एंड स्टेट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. बी पार्ट इज व्हाट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय सच अ कंपनी. Second question is explain the meaning of pre-incorporation contracts. What is the legal status of pre-incorporation contracts? B part is what do you mean by the doctrine of indoor management? Are there any exceptions to this doctrine? Elaborate. C part what are the judicial restrictions on the alteration of article of association? और पार्ट में आपसे पूछा है डिफाइन अ promoter of a company, discuss his position in relation to the company of which he is the promoter. B part what is the procedure for alteration of the object clause of a memorandum of association? C is differentiate between MOA and AOA. थर्ड क्वेश्चन में पूछा है what are the remedies available to an allottee against misstatements in the prospectus? B part is what is an irregular allotment of shares? C is distinguish between transfer and transmission of securities. और पार्ट में आपसे पूछा है what is the golden rule or golden legacy regarding prospectus? B distinguish between right shares and bonus shares. C part state the conditions required to be fulfilled by a company for the buyback of its share. फोर्थ क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट नोट पूछा है फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर. बी पार्ट इज व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग. और पार्ट में डिस्कस द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बी पार्ट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस व्हिच मे बी रिक्वायर्ड टू पास ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेसेस इन एन एनुअल जनरल मीटिंग. एक्सप्लेन. Fifth question is, can the dividend be declared out of the previous year's profits transferred to reserve? Support your answer with relevant provisions. B part is, what will disqualify a person from being appointed as an auditor of a company? C part, state the grounds on which the registrar of the companies can file a petition for winding up of a company. और पार्ट में आपसे पूछा है स्टेट द लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स. बी पार्ट इज डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स. सी पार्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. If you find this video helpful, then make sure to like the video, share it with your classmates and subscribe to the channel. Also comment below if you want detailed answers of these PYQs in the next video. Your comments help me decide what videos to upload next. See you in the next video. Thank you for watching.